Hey guys, I'm back with another strawberry dessert. और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ none other than the classic French fraisier. It is made with Genoa sponge, custard filling and lots of fresh strawberries. And if you want to impress your family with your baking skills, then you should definitely try this out at home. I am Chef Aruna from Tufan School, Delhi, जहाँ हम आपको बनाते हैं एक professional pastry chef just like me in just 6 months. Also, अगर आप हमारे offline courses के बारे में जानना चाहते हो, then click the link given in the description box. Because the registration for March 2024 batch is open and the seats are filling fast. Now let's get back to the fraisier. So इसके स्पॉन्ज की रेसिपी आपको हमारे स्ट्रॉबेरी एंड लेमन पेस्ट्री के वीडियो में मिल जाएगी. And if you wish to make it eggless, then you can use the sponge from strawberry shortcake recipe क्योंकि उसका texture Genoa sponge से काफी similar है. Also, the quantity will be mentioned in the description box, so click the link to check out the recipe. So अब हम fraisier की filling बनाएंगे, that is custard filling और pastry cream. उसके लिए इस सॉसपैन में हम फुल क्रीम मिल्क डालेंगे. Followed by evaporated milk, vanilla essence. अब हम इसे सिमर होने के लिए छोड़ देंगे. Meanwhile, हम एक बोल में कैस्टर शुगर, कॉर्न फ्लावर, कस्टर्ड पाउडर और सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. And once the milk starts to simmer, हम इस ड्राई मिक्सचर को मिल्क में डाल के कुक होने देंगे जब तक इसका टेक्सचर कस्टर्ड जैसा ना हो जाए. Once it has the custard consistency, remove it from the heat and add unsalted butter. Now we'll transfer it to a bowl and cling wrap it from the surface and let it cool down completely. So our custard has cooled down completely. Now we'll add this to the dairy whipping cream and beat it until it has soft peaks. Now let's make the strawberry syrup, जिससे हम स्पॉन्ज को सोक करेंगे. For that, we'll simply mix water with strawberry puree. In this, we'll add in some icing sugar along with some lemon juice. So all the elements for the cake is almost done. अब हम इसकी assembly start करेंगे. So for the assembly part, मैंने पहले से ही स्पॉन्ज को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था. अब हम एक राउंड OHP शीट को इस रिंग के अंदर प्लेस कर देंगे. Now inside this ring, we'll place a layer of sponge and soak it with the strawberry syrup. अब हम स्लाइस स्ट्रॉबेरीज को प्लेस कर देंगे अराउंड द OHP शीट लाइक दिस. एंड हम अपनी कस्टर्ड फिलिंग को सेंटर में पाइप कर देंगे. मेक श्योर कि आप फिलिंग को इन बिटवीन द स्ट्रॉबेरीज भी पाइप करें. अब हम मिडिल पे चॉप स्ट्रॉबेरीज प्लेस कर देंगे. And again we'll pipe the custard filling on top of the strawberries, then smooth out the top. इसके ऊपर दूसरी स्पॉन्ज की लेयर प्लेस कर देंगे एंड थोड़ा सा कस्टर्ड फिलिंग स्प्रेड कर लेंगे.
Now we'll make the strawberry jelly for the fraisier. Until then, we'll keep the fraisier in the fridge. Strawberry jelly के लिए we'll mix agar-agar and castor sugar together. And in this saucepan, we'll heat some strawberry puree and water. Once they start to boil, we'll add in the agar-agar and castor sugar mixture and cook until it thickens a little. अब हम इसको फ्राइजर के ऊपर अच्छे से पोर कर देंगे like this. Now we'll keep it in the fridge for 1 hour until the jelly sets completely. So it's been more than 1 hour, now it's time to demold the fraisier. We will simply lift the ring and जैसे कि आप देख सकते हैं, it looks heavenly. For garnishing, we'll simply pipe some sweet whipped cream with sultan nozzle and round nozzle alternatively. And pipe strawberry reduction in the whipped cream piped with sultan nozzle. So for the strawberry reduction, you can check out our lemon and strawberry recipe, जिसकी लिंक आपको description area पे मिल जाएगी. Also make sure कि आप OHP sheet तभी remove करें जब आप इसे consume करने वाले हो. Otherwise, it may lose its shape if kept without OHP sheet for too long. We'll also place sliced strawberries randomly. And with this, we are done with the classic French fraisier. I hope आपको ये रेसिपी पसंद आई हो. So do like, share and subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon to stay updated. Also let us know in the comment section which strawberry dessert you guys want me to teach you next. And I'll be back with another new recipe. Till then, keep baking.